here along with your kid. Yes, right. You are excited waiting for the moon? Yes, very much. Now it's covered with all the clouds, and we are very excited to witness the lunar eclipse today and see the detailed process, how it happens, and everything. But currently, we are not able to see it because of the clouds. So we are just waiting here, standing. Yeah. In Indian tradition and Indian culture, eclipses means a lot for us. Yes, and in right. astronomy also. Do you believe in astronomy? Yeah, I'm neutral about it. Yeah. I am neutral about it. Okay. Yeah. Okay, thank you. Yeah. आप लोग नेहरू प्लानिटोरियम में पहुंचे हैं बड़ी संख्या में along with your family. Yes, yes. Lunar eclipse ये साल का अंतिम ग्रहण आप लोग देखेंगे. कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ नया लेकर के जाने वाले हैं आज? I'm very excited, and today with my family, we are witnessing it for the first time here. And I know this is a scientific phenomena, as well as I also believe in astrology. I'm a tarot card reader. So I believe that, these eclipses are just to cleanse yourself. The moon energy will cleanse, detoxification of your body. So it is very, very natural phenomena. And scientifically also we can see it with bare eyes. So it is very safe for us and kids. And I believe that, all the eclipses which have happened to change your life. So this is a very great phenomena here. You are a tarot card reader. Yes. And when we talk about the year 2025, it was a lot of hustle and bustle. It was just like a roller coaster Yes. for all of us. So when we talk about this lunar eclipse, what we can predict as of now? See, this is the time when I see that, this is the month of Mars also. So this is, you are at your high energy. So I, as a tarot card reader can say that you need to channelize your energy. This month is to channelize your energy. And just, just Hanuman ji ke aap Chalisa roj padhiye, that's like a boon for you. And this is, just a transformative journey. These eclipses are, there's a whole cycle. When these eclipses come, we say that Grahan laga hai, Rahu, and also it is like, something bad happened to anybody's life in general. But this eclipses just cleans your cycle, transformation of your life. So this is the biggest, you should just sit, meditate, and just, you can enjoy that moment and just release all the fears, anxiety, and all the negative thoughts. Just start your life again. It's kind of rebirth in your own life. So that's what. When we talk about Indian culture, Indian tradition, तो हमारे वहाँ कई लोग इसको ऑप्टिमिस्टिक लेते हैं, कई लोग इसके बारे में तमाम निगेटिव बातें करते हैं. इस बार का चंद्र ग्रहण किस तरीके से खास रहने वाला है, क्योंकि ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रहने वाला है. और जब हम तमाम राशियों की बात करते हैं तो किस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए पूछ. See, when we talk about eclipse, लोगों के अपने इंडियन समाज में इतना है कि this is just keep away with that. Of course, because जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी और उनको लगता था कि शायद क्योंकि लाइट्स और जो भी मतलब माहौल होता था, environment was not very compatible. But आज के जमाने में since you know that this energy exists, moon है, and we can channelize ourselves. मतलब हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं. We are just energy like a moon. So अभी जो eclipse जो ये है 2025 का, this is very strong because this is the year of Mars. Even we are standing in the month September. This is a month of Mars again. And so Mars energy is very furious, very energetic, passionate. Use it in the positive side. अगर आप बहुत ज़्यादा low feel करते हैं तो you cannot channelize your energy. और उसी टाइम पे अगर आप not channelizing your energy, तो आपके साथ हो सकता है कि आप बैड भी अट्रैक्ट करें. So just इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको पता है कि आपके बारे में क्या फिनोमेना चल रहा है, आप अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकते हो, तो आप पॉजिटिव ही सोचिए. पॉजिटिव सोच के जस्ट क्लींस. जैसे मून में आप देखिए ना, अभी एक्लिप्स पड़ेगा ना, और वो उस दौरान में कितने कष्ट में होंगे मून. तो वी ऑल्सो फेस स्ट्रगल द सेम वे. नाउ एक्लिप्स इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि जब वो एक्लिप्स हटता है तो मून की एनर्जी ऑटोमेटिकली इट गेट क्लींस. तो ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ होता है, जब हम स्ट्रगल फेस करते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरते हैं. तो इस चंद्र ग्रहण से हमें सीखना चाहिए कि यस, उतार और चढ़ाव यस, डेफिनेटली. यस, करेक्ट. चांद जैसे एकदम शाइन करिए, चमकते रहिए. चमकते रहिए. थैंक यू.